Serial number 1. अच्छा, none for the petitioner. It is informed that arguing counsel Shri Anand Nayak is adjusted today. Therefore, case is adjourned. List after a week. चलिए. Serial number 2. Sri Udyam Tiwari, Sri Surya Pratap Singh Roy. Well, that is kindly taken as weak one. क्यों? Because senior today is out of station में वो उनके यहाँ वो हुई तो वो गए वहाँ फैमिली में कर ही है सर. आपका शुभ नाम क्या है? नीरज तिवारी. Shri Neeraj Tiwari submits that arguing counsel is not available and prays for adjustment. On his request, case is adjourned. None for the respondent Khadi Deva. Serial number 3. Serial number 3. This is something very inspiring and to learn from you. You appear in every matter. That's really very good. My lord, if we do not assess this court, how does justice Therefore, reach to a litigant? therefore, I am expressing my sentiments that Otherwise, Upadhyay is always there. Maybe having some sort of inconvenience. Otherwise, it was regular earlier also. Earlier, it was listed a number of times, my lords. So he was always present. It was not that he was. Srimati Shobha Menon, learned senior advocate, It remains in the test. assisted by Shri Rahul Chaube. None for the respondent. It is informed that due to some personal difficulty, 1 and 2 के लिए none. arguing counsel for respondent number 3, which is the main contesting party. नहीं, respondent number 1 and 2 के लिए आप नहीं, आप 3 के लिए हैं. जी 1 1 2 none. Respondent number 1 and 2, which is the main contesting party. Counsel is not available. Reluctantly, case is adjourned. List next week. Serial number 4. Sri Rajesh Mehndi Ratta. My lords, I am appearing on behalf of Advocate Rajesh Mehndi Ratta. We are having no instructions in this case. देखिए, आपका शुभ नाम बताइएगा. Udita Mehndi Ratta. Miss Udita Mehndi Ratta, learned counsel for the petitioner. Shri Vikram Johri, learned counsel for the respondent. Miss Udita Mehndi Ratta needs no instructions in the matter. Accordingly, petition is dismissed for want of instructions. My lords, presence of my senior may be marked. उनको आना पड़ेगा उसके लिए. Because मतलब इनका शायद वकालत हम नहीं होगा पुराना. कोई बात नहीं. Obliged. इनके सीनियर आगे कहा है कि उन्होंने इनको इंस्ट्रक्ट नहीं किया था. Serial number 5. Serial number 5. Sri NS Rupra. Lordship, I am praying for a next week. क्या हो गया? क्या हो गया? Senior is not available, my lord. कौन से सर? Mr. Sanjay K. Agrawal. None for the petitioner. Shri Yashovardhan Jain. Yashovardhan Jain submits that arguing counsel for the respondent is not available today. On his request, case is adjourned. List after a week. Obliged, Lordship. Serial number 6. Sri J. Misra, P.K. Misra. चार केस हैं वायलेंट. हाँ मिश्रा जी बताइए ना. कनेक्टेड वायलेंट. क्या ग्राउंड है, क्या है? मतलब इसमें ये रिलाई कर्मचारी था रिस्पोंडेंट्स के. उसमें 1993 में इसको निकाल दिया गया था. तो अपील फाइल हुई थी. अपील अलाउ हो गई और अपील अलाउ होने के बाद रिस्पोंडेंट्स ने रीट पिटीशन फाइल किया था और रीट पिटीशन भी डिसमिस हुई. उस बीच में ये ऑर्डर हुआ था कि इनको आप रीइंस्टेट करोगे और बैक वेजेस दोगे स्टे ऑर्डर में. फाइनल ऑर्डर उस बीच में क्या है, हमको ज्वाइनिंग तो करा लिए, लेकिन ज्वाइनिंग कराने के बाद हमसे काम नहीं ले रहे थे और फिर कुछ दिन बाद हमारा ट्रांसफर जो है ना कलकत्ता के लिए कर दिया गया. तो उसको मैंने अमेंड किया था रीट पिटीशन में, अर्लियर रीट पिटीशन में. तो रीट पिटीशन वो अलाउ होने के बाद से वो हमारा लास्ट पैरा नंबर में उन्होंने ऑर्डर उन्होंने किसने? उन्होंने मतलब
previous honorable high court. कहाँ है वो ऑर्डर? ये 2703 में अभी पहले जो लगी है 16,635 16,635 पहले वो लगी ये पहले 2702 लगी है, 2702 में इसमें क्या ग्रीवेंस है, एक करके बताइए। महिला 2702 में क्योंकि जो उन्होंने हमारा ट्रांसफर कर दिया था मुर्शिदाबाद के लिए, ज्वाइन तो हमें करा लिए, ज्वाइन कराने के बाद हमें मुर्शिदाबाद ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, तो उसको हमने चैलेंज किया था। पढ़िएगा रिलीफ क्लॉज पढ़िएगा। ये साइड दी ऑर्डर इम्प्यून डेटेड 24/4/2002 हाँ इनेक्जर P4 का ऑर्डर है हमारा, P4 पेज नंबर 11 ये इम्प्यून ऑर्डर है पढ़िएगा, 24/4/2002 का। पढ़िएगा। अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा एक संशोधन आवेदन पत्र दिनांक 15/10/2021 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदन पत्र की प्रार्थना वाली कंडिका की दूसरी व तीसरी पंक्ति में अंकित शब्द का अन्य प्रांत में किए गए स्थानांतरण को निरस्त कर अलग किया जाना है एवं द्वितीय पंक्ति में अपीलार्थी को पश्चात को शब्द जोड़कर जाना है। इस संबंध में प्रति अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई कि संशोधन करने का प्रकरण में मूल स्वरूप परिवर्तित हो जाएगा। इसके अलावा संशोधन आवेदन इतने विलंब से प्रस्तुत किया गया है कि अवैध बाह्य होने से ग्राह्य योग्य नहीं है। अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के न्यायमूर्ति ML मलिक एवं न्याय दृष्टांत दिया जो आदेश 6 नियम 17 CPC के संबंध में निर्णित किया गया कि संशोधन आवेदन पत्र प्रकरण के निर्णय दिन भी दावे में संशोधन हेतु स्वीकार किया जाना चाहिए। MP वीकली नोट सुनतो उभय पक्षों के तर्क श्रवण करने के पश्चात एवं संपूर्ण प्रकरण पत्रिका के अवलोकन पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका हूं कि संशोधन आवेदन ग्राह्य करने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि आवेदन बहुत विलंब से प्रस्तुत किया गया है जो अवैध बाह्य होने के कारण योग्य नहीं है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टांत में प्रभावशील नहीं है क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय माननीय न्यायाधीश के निर्णय की मंशा स्पष्ट है कि प्रकरण में संबंधित संशोधन पर ही न्यायालय विचार कर सकता है, न कि आवेदन के संपूर्ण स्वरूप में परिवर्तन करने से संबंधित संशोधन पर। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता में कथन यह भी मान्य योग्य नहीं है कि उन्होंने भूलवश आवेदन में स्थानांतरण शब्द लिख दिया है। वस्तुतः वरिष्ठ अधिवक्ता है, उनसे अपेक्षा नहीं की जाती कि ऐसे प्रकरण में जो उन्हें माध्यम से कई न्यायालयों के एक साथ चल रहा है इस ढंग से शाब्दिक त्रुट करेंगे। कार्यवाही विवरण दिनांक 15/11/99 को अपीलार्थी के अधिवक्ता को संशोधन की अनुमति इस आधार पर दी गई कि यदि वो चाहे तो कर सकते हैं, किंतु उनके द्वारा संशोधन प्रस्तुत अस्वीकार कर दी गई। अब पुनः संशोधन प्रस्तुत करने का क्या औचित्य है, इस बात से वो सिद्ध करने में असमर्थ है। आवेदन पत्र के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि आवेदन पूर्ण रूप से स्थानांतरण को निरस्त करने के लिए किया गया है, जैसा कि अपीलार्थी ने आवेदन दिनांक 13/10/95 में उल्लेखित भी किया है कि उसके अन्य प्रांत में किए गए स्थानांतरण को निरस्त किया जाकर पूर्व पद पर स्थापित करने का आदेश प्रसारित किया जावे। वस्तुतः अपीलार्थी को 1/9/95 के आदेश द्वारा सागर से लुधियाना स्थानांतरित कर दिया था, जिससे दुखी होकर उसने प्राधिकारी के समक्ष स्थानांतरण निरस्त किए जाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। क्योंकि बीड़ी एवं सिगार कामगार नियोजन शर्तें अधिनियम 1966 धारा 31(2) के तहत कर्मचारी के स्थानांतरण पर विचार नहीं किया जा सकता, अतः प्रार्थी के स्थानांतरण आदेश को श्रम न्यायालय में चुनौती दी जो अभी तक श्रम न्यायालय सागर में लंबित है। प्रकरण में पूर्व अधिकारी द्वारा बात पर निर्धारित किया गया था कि क्या अपीलार्थी के स्थानांतरण किया गया है एवं अपील अधिनियम की धारा 31(2) अंतर्गत ग्राह्य योग्य नहीं है। क्या अपीलार्थी की सेवाएं अवैधानिक रूप से समाप्त की गई है, यदि हाँ तो वह किस सहायता के पात्र है। बाद क्रमांक 1 निश्चित रूप से बीड़ी एवं सिगार कामगार अधिनियम 31(2) को आकर्षित नहीं करता है क्योंकि धारा 31(2) के तहत केवल सेवा निष्कासन का विषय विचारणीय है। बाद प्रश्न क्रमांक 2 वस्तुतः तथ्यात्मक नहीं है क्योंकि अपीलार्थी की सेवाओं को केवल स्थानांतरित किया गया है, कहीं भी लिखित रूप से समाप्त नहीं किया गया है, न कि अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी प्रस्तुत किया गया है जो सेवा निष्कासन को दर्शाता हो। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संशोधन आवेदन पत्र के मूल आवेदन पत्र दोनों ही निरस्त किए जाने
योग्य है क्योंकि स्थानांतरण का प्रकरण अपीलार्थी द्वारा श्रम न्यायालय में दायर किया गया है एवं सेवा निष्कासन का प्रकरण इस प्राधिकारी के समक्ष अपील क्रमांक 7 के तहत प्रस्तुत किया गया है, जो कि निर्णय सुरक्षित है। अतः प्रकरण पूर्णतः निरस्त किया जाता है। उभय पक्ष अपना अपना व्यय वहन करेंगे। ये बताइएगा, ये 1966 का एक्ट लाए हैं आप? लीजिएगा, कहाँ पर है भैया? बीड़ी कामगार ये मेंटेनेबल नहीं है, इसके तहत मैंने लिया। नीचे है 31 कुछ। हाँ, तो employee discharge, dismiss or retrenched. Yes. Transfer order is not assailable before. अपने पक्षकार को बोलिए बैठ जाए. There will be no. मतलब जो इस तरीके का साइकोलॉजिकल प्रेशर मत बनाने की कोशिश करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं वो यहाँ आके खड़े हो जाए, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केस वही होगा जो मैरिट्स में हो सकता है। नहीं, क्योंकि ठीक है। इसलिए आए थे कि एक में हमारा पावर नहीं था। कोई बात नहीं, जिसमें वो पावर नहीं है, वकील साहब वो खंडवा चले गए ठीक हैं। है, कोई बात नहीं, जिसमें पावर नहीं है उसमें उनको बुला लेंगे। जी, पहले अभी तो इसको समझ लें। जी जी जी। ट्रांसफर के खिलाफ बताइए 31(2) में कैसे मेंटेनेबल है? माइलैंड उसमें जो प्रीवियस ऑर्डर है हाई कोर्ट का, तो उसमें 2002 में ही क्वेश्चन क्या हाई कोर्ट का ऑर्डर जो है वह स्टैट्यूटरी प्रोविजन को सुपरसीड कर सकता है? पढ़िए हाई कोर्ट का ऑर्डर कहाँ है वो? इसमें 27/2003 में है। 27/2003 में। ये क्योंकि टर्मिनेशन का है, इसमें देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। हाँ, एक में वो ट्रांसफर ऑर्डर हमारा ट्रांसफर कर दिए। हाई कोर्ट ने क्या कहा है पढ़िएगा। ये पेज नंबर है 16। ये तो रिमूवल को चैलेंज किया था आपने। Yes, sir. उसको बाद में आएंगे, वो तो मेंटेनेबल है। इसमें लिखा है डिसमिसल, नोटिस ऑफ डिसमिसल, ये तो मेंटेनेबल है। ये बताइए, ये जो अमेंडमेंट के खिलाफ आपने याचिका लगाई है, ट्रांसफर ऑर्डर की आप जो है चैलेंज करना चाहते थे, 31(2) में कैसे मेंटेनेबल है ये? माना कि 1 फरवरी 2002 को ये हमारा ट्रांसफर ऑर्डर उन्होंने किया 95 में मुर्शिदाबाद के लिए, ज्वाइन नहीं कराए और ज्वाइन न कराने के बाद हमारा ट्रांसफर कर दिया कलकत्ता। ओके, आप कलकत्ता भाई, आप देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। जी। वन इज योर रिमूवल और डिसमिसल। तो रिमूवल ऑर्डर हमारा क्वेश्चन कर दिया गया। कर दिया गया। क्वेश्चन करने के बाद उसमें रीइंस्टेट के लिए ऑर्डर कहाँ रीइंस्टेट करने के लिए कहा गया? ये इसमें 27/03 में है। कब, कहाँ, क्या कहा गया बताइए? ये इनेगर P2 में है। P2 पढ़िए हाँ। प्लीज। P2 के पैरा नंबर 10 में ट्रांसफर के संबंध में पढ़िए 10 में क्या कहा है? ये रिस्पोंडेंट की रिट पिटीशन, वो पिटीशन थी वाला। तो ऑब्जर्वेशन है ये। पहले तो ये बताइए कि 31(2) के में कैसे आएगी अमेंडमेंट एप्लीकेशन ट्रांसफर के बारे में। दैट इज एन ऑब्जर्वेशन बाय अ कोऑर्डिनेट बेंच। ठीक है, ऑब्जर्वेशन बाइंडिंग फाइंडिंग नहीं है। क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड है। वो ठीक है, उसको सुनेंगे ना, अभी उसको सुनिए, पहले इसको लिखिएगा। WP 2702 of 2002. This writ petition is filed by the workmen. इसमें उसी ट्रांसफर ऑर्डर को रीट पिटीशन भी चैलेंज हुआ है, जो रीट पिटीशन नंबर 16/6/35/2000। उसको भी सुनेंगे ना अभी, उसको थोड़ा ना, अभी तो सिर्फ अमेंडमेंट के बारे में है। This by the workmen, full stop. This petition is filed assailing the order passed by the appellate authority under BD and cigar workers within bracket conditions of employment bracket close Act 1966
on oblique Assistant Labor Commissioner Sagar. Full stop. Petitioner is assailing order dated 24/4/2002, whereby an application seeking amendment in the pending case number 65/95, which subject matter of which is in regard to removal/dismissal of the petitioner, moved an application to challenge the order, to amend the pleadings and challenge the order of transfer. Full stop. It is submitted that this amendment should have been allowed, and learned appellate authority cum Assistant Labor Commissioner committed an error in rejecting the application. Next paragraph. Shri Mishra learned Respondent number 2. P.K. Mishra for respondent number 2 in his turn submits that provisions of section 31 within bracket 31 deals with notice of dismissal. Full stop. Section 31 within bracket 2 bracket close another bracket small a of the Act of 1966 deals with discharge, dismissal or retrenchment. Full stop. There is no provision for assailing the order of transfer under the provisions contained in section 31 within bracket 2 another bracket small a, and therefore the amendment sought by the petitioner being highly belated as was moved in the year. I have your amendment application. As was moved on 15/10/2001, assailing the transfer order of 1995, respondent authority has rightly dismissed the application. Next paragraph. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, it is evident that the application which was pending before the appellate authority is under section 31 within bracket 2 of the Act of 1966. Full stop. It is an admitted fact that transfer is not covered under the provisions contained in section 31 under 31 because section 31 only deals with dismissal. Therefore, application filed by the petitioner to seek amendment and assail the transfer order being not in consonance with the provisions contained in section 31 of the Act of 1966, no illegality can be attached to the impugned order calling for interference. Thus, the order of the appellate authority is upheld. Petition being devoid of merit deserves to be dismissed and is dismissed. चलिए, अब next case बताइए. WP number 2703. 2703 इसको हटाइए. इसमें क्या है? ये टर्मिनेशन का ऑर्डर हमारा लेक्चर P3. इसमें क्या कहा अथॉरिटी ने? Where is the impugned order? ये impugned order page number 17. Connected P3. P3 29/4/2002. ये पढ़िएगा क्या कहा. ये नहीं, पहले ये 95 का केस का और भी कोई ऑफशूट है क्या? 95 का भी केस डील किया ना जिसमें अमेंडमेंट अलाउ नहीं किया था. अमेंडमेंट एक्चुअली सर ये जो दूसरी पिटीशन लगी है इसको इंडिविजुअल इस पहली पिटीशन को चैलेंज किया थे ने, फिर यूनियन के थ्रू इसी ऑर्डर को ये WP नंबर 16635/2010 में जो है उसमें चैलेंज किया तो वो भी खारिज हो गया. 16635 पहले जी ये भी मैटर रिगार्डिंग टू ट्रांसफर यू ऑल्सो सेम इम्पाउंड ऑर्डर. 16635 दिखाइए. तो उसी में जो अभी ऊपर लिखा था ना आपने 202 वाला, उसी में लिखिए petitioner has challenged the said same order. थ्रू यूनियन माय लॉर्ड. हाँ, एक से रुक जाइए. जी. Of transfer through union
and while order dated 29/1/2010, learned presiding officer of the Labour Court Sagar in case number 16/98 ID reference dismissed the claim of the petitioner challenging the transfer order full stop. While answering the reference, learned Labour Court has held that in terms of the क्या लिखा? In terms of the no, has held that there is no mention of the fact that claimant workman had any problem in regard to the language which is spoken in West Bengal and has not made any such mention in his statement of claims. Full stop. It has held that since no malafide is proved in regard to transfer of the workmen from Sagar to West Bengal, comma, placing reliance on the judgment of Supreme Court in National Hydroelectrical Power Limited versus Bhagwan Das AIR 2001 SC 3309 निकलवाइएगा please, and also placing reliance on the judgment of Madhya Pradesh High Court in R.K. Mishra versus MP SRTC and two others 2003 SLR 488 has held that in absence of any malafide transfer order does not call for any interference. Full stop. And accordingly dismiss the request of the petitioner to cause indulgence in the matter of his transfer from Sagar to West Bengal. Full stop. Next para. Law is well settled that transfer order can be challenged only on only on the following grounds, namely lack of authority, comma, and second ground is that of malafide. In the present case, none of these grounds have been substantiated by the petitioner to assail the order of transfer. Full stop. In view of such facts, when judgment of Supreme Court in National Hydroelectrical Power Limited versus Bhagwan Das is taken into consideration. दीजिएगा भाई. 3309. And 2001. क्या लिखा था? Sorry. Same is the then Honorable Supreme Court has held that transfer of an employee from corporate office to new project
If such transfer is not prohibited by rules and no malafides are shown, then alleged adverse consequences detrimental to seniority of such employees not likely to occur, then no interference is called for. Full stop. In the present case, this judgment applies in full force, and therefore this petition challenging the order of transfer and thereafter the order of the Learned Labour Court in case number 16/98 ID Act reference does not call for any interference, as transfer being an incidence of service does not call for interference. Petition fails and is dismissed. अब ये 2703 बताइए ये क्या है? ये सेवा समाप्ति के विरुद्ध है। जी पढ़िएगा। इनके P3 है इम्प्रीम ऑर्डर 29/4/2002। जी पढ़िएगा। 29/4/2002। यह अपील बीड़ी एवं सिगार कामकाज नियोजन शर्तों अधिनियम जिसे आगे अधिनियम कहा जाएगा धारा 31(2) के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसे इब्राहिम तना इस्माइल अपीलार्थी जिसे आगे अपीलार्थी कहा जाएगा, मिसेस खेमचंद मोतीलाल जैन को प्रोडक्ट लिमिटेड सागर जिसे आगे अपीलार्थी कहा जाएगा के आदेश दिनांक 30/6/98 जो प्रदर्श P3 है के विरुद्ध दायर की गई है। अपीलार्थी की सेवा समाप्ति से संबंधित है। अपीलार्थी का कथन है कि प्रति अपीलार्थी संस्था में 24 वर्षों से रिलाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत है। अपीलार्थी के पूर्व में भी प्रति अपीलार्थी संस्थान द्वारा उसे 17/3/93 को सेवा को समाप्त कर दी गई थी, जिसके विरुद्ध उसने अपीली प्राधिकारी के समक्ष आवेदन पर प्रस्तुत किया था, जिसे अपीली प्राधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 11/1/95 के द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में निर्णय देते हुए उसे पुनः सेवा में बैठे दिनों के वेतन के साथ स्थापित करने के आदेश दिया था, जिससे परिपालन में अपीलार्थी को प्रति अपीलार्थी द्वारा पुनः सेवा में रख लिया गया। किंतु कुछ दिनों पश्चात प्रति अपीलार्थी ने अपने आदेश दिनांक 1/9/95 क्रमांक इतने द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण अपनी पश्चिम बंगाल स्थित शाखा लुधियाना मुर्शिदाबाद कर दिया गया, जो प्रदर्श D1 है। प्रति अपीलार्थी का कथन है कि मध्य प्रदेश में उसकी कोई शाखा नहीं रह गई है। अपीलार्थी ने प्रति अपीलार्थी के स्थानांतरण के विरुद्ध औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत यूनियन के माध्यम से श्रम न्यायालय में विवाद प्रस्तुत किया है, जिसका क्रमांक 16/98 ID रेफरेंस है, जो अभी तक लंबित है। प्रति अपीलार्थी के अपीली प्राधिकारी के आदेश दिनांक 11/1/95 के विरुद्ध उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने बैक बेजत छोड़कर उसे पुनः सेवा में बहाल करने का आदेश यथावत रखा। अपीलार्थी का कथन है कि उच्च न्यायालय, श्रम न्यायालय तथा अपीली प्राधिकारी के यहाँ प्रकरणों में लंबित रहते हुए उसे निष्कासित किया जाना दुर्भावनापूर्ण एवं अवैधानिक है। अपीलार्थी ने यह निवेदन किया कि अपीलार्थी बीमार होने के कारण अपीली समय अवधि में प्रस्तुत नहीं कर सका, क्योंकि वह बीमार होने के कारण जबलपुर चला गया था, इसलिए विलंब को क्षमा कर अपीली समय अवधि में मान्य की जावे। अपीलार्थी ने अपनी जवाबदावा दिनांक 7/12/98 को मुख्य रूप से कथन किया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील समयावधि बाह्य है एवं उसके द्वारा समुचित एवं पर्याप्त कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रति अपीलार्थी ने इसे प्रारंभिक बात पर बनाया जाकर पहले निर्णय करने की प्रार्थना की है। यह कि प्रति अपीलार्थी ने स्वीकार किया है कि अपीलार्थी उसके यहाँ 24 वर्ष से रिलाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत रहा। प्रति अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी का यह कहना गलत है कि अपीलार्थी द्वारा दायर न्यायालयिक प्रकरण के कारण उसे दुर्भावनावश दिनांक 30/6/98 को निष्कासित कर दिया गया, बल्कि सच यह है कि प्रति अपीलार्थी द्वारा अपीलार्थी के गंभीर दुराचरण, लंबे समय तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना एवं आदेश की अवहेलना करने के कारण उसकी सेवाएं आदेश दिनांक 30/98 द्वारा अवैधानिक रूप से समाप्त की गई है। अपीलार्थी को सेवा समाप्त किए जाने के पूर्व नोटिस
दिनांक 18/8/95, 10/10/95 एवं 10/5/96 एवं 23/5/96 को दिए, जिसका अपीलार्थी द्वारा जानबूझकर पालन नहीं किया गया। इस कारण अपीलार्थी का यह कथन अमान्य है, उसे पूर्ण अवसर नहीं दिया गया एवं प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत का पालन नहीं किया गया। प्रकरण निराकरण के लिए दिनांक 23/2/99 को बाद प्रश्न निर्धारित किए गए, जो इस प्रकार है। क्या अपील समयावधि के बाहर होने से चलने योग्य है? क्या अपीलार्थी की सेवाएं प्रतिपरार्थी द्वारा वैधानिक रूप से समाप्त की गई है? यदि हाँ, तो अपीलार्थी की सहायता में जहां तक अपील के अवधि बाह्य होने का प्रश्न है, उस पर विशेष रूप से विचार किया गया। वस्तुतः मध्य प्रदेश बीड़ी एवं सिगार कामगार नियोजन शर्तें नियम 1968 के नियम 26 के उप नियम 2 के अनुसार कोई भी कर्मचारी सेवा बर्खास्तगी या छटनी के आदेश की सूचना दिनांक से 30 दिन की अवधि के भीतर अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा, परंतु ऐसी अपील उस 30 दिन के बाद भी उस स्थिति में ग्रहण की जा सकेगी जब अपीलार्थी प्राधिकारी इस बात से समाधान कर दे तो उस अवधि के भीतर अपील न करने के उसके पास पर्याप्त कारण है। प्रकरण में अपीलार्थी को प्रति अपीलार्थी द्वारा सेवा से दिनांक 30/8/98 को निष्कासित किया गया और उसने अपील 17/8/98 को दायर की, जो 19 दिन विलंब से प्रस्तुत की गई है। यद्यपि अधिनियम में अपीलीय प्राधिकारी को विलंब की अवधि को क्षमा करने का अधिकार प्राप्त है, किंतु यह अधिकार पूरी तरह प्राधिकारी की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि अपीलार्थी ने उसे इस बात का समाधान करा दिया है कि वह उचित कारणों से समयावधि में अपील को दायर नहीं कर सका। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी ने विलंब का यह कारण बताया है कि वह बीमार होने के कारण जबलपुर चला गया और अपील समय पर प्रस्तुत नहीं कर सका। वस्तुतः प्रार्थी सागर का मूल निवासी है और इस बात से समय से परे हुआ बीमारी की स्थिति में सागर में इलाज न कराकर जबलपुर क्यों गया है। उसने जबलपुर के किसी भी डॉक्टर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है और उसने अपने बयान जबलपुर में किसी डॉक्टर का नाम नहीं लिया है जिससे उसने जांच कराई हो। इसके अलावा उसने सागर के डॉक्टर एनसी सिंघाई का सर्टिफिकेट 15/8/98 है, जो प्रस्तुत प्रदर्शनी 4 है प्रस्तुत किया गया। वह स्पष्ट नहीं है कि किसी ऐसी बीमारी का संकेत भी नहीं करता है कि जिससे समय में अपील दायर न की जा सकती। अपीलार्थी ने डॉक्टर के साक्ष्य भी नहीं कराया है। इस प्रकार उसे उत्तर से यह प्राधिकारी संतुष्ट नहीं है और प्रकरण में अवधि बाह्य होने के कारण ग्राह्य होने से योग्य नहीं करने योग्य नहीं समझता। वस्तुतः अपीलार्थी की सेवाएं प्रति अपीलार्थी द्वारा इस आधार पर समाप्त की गई है कि उसने स्थानांतरण आदेश का पालन नहीं किया और प्रति अपीलार्थी ने अपने आदेश दिनांक 1/9/95 में स्पष्ट उल्लेख किया है कि मध्य प्रदेश में प्रति अपीलार्थी की कोई शाखा नहीं है। इस आधार पर उसे मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल स्थित लुधियाना शाखा में उसे मूल पद पर स्थानांतरण किया जा रहा है। एक मिनट मिश्रा जी, आपने कोई एविडेंस फाइल की थी कि आपको ये नोटिस नहीं मिले या जो है आपको अभी सूचना पत्र शामिल नहीं हुआ? नहीं, टर्मिनेशन का हमें कोई टर्मिनेशन का नहीं, टर्मिनेशन के पहले ही जो सूचना पत्र का हवाला आ रहा है, 4-4 5-5 सूचना पत्र दिए गए आपको, इस बारे में आपने क्या एविडेंस लीड करी है? इसमें कहा ना इन्होंने 10/10/95, 10/5/96, 23/5/96 को बार बार उसे अपने स्थानांतरित 18/9/95 ये ग्रहण करने के लिए नोटिस दिए गए, लेकिन उसका जानबूझकर अपीलार्थी ने पालन नहीं किया। इसकी एविडेंस आप पढ़िएगा, एविडेंस पढ़िए, इसमें है नहीं, मेंशन नहीं है रीड में। वेयर इज द एविडेंस? पढ़िए ना आप भाई, this is a dismissal on account of your non-compliance of the orders of transfer, ठीक है? इसमें और रीड पिटीशन में ये मेंशन नहीं है जी, रीड पिटीशन में और
तो रिकॉर्ड बुलवाले से रिकॉर्ड है नहीं है इसमें? हाँ, लिखिएगा लेट रिकॉर्ड ऑफ द असिस्टेंट लेबर कमिश्नर सागर which decided appeal number 7/98 we called for to appreciate the facts of the case in better manner. List along with the record in the week commencing 27 फरवरी 2023. ये क्या है? 18977 किस चीज के लिए है? ये हमारा जो प्रीवियस जो हमको टर्मिनेट किए थे और टर्मिनेशन के बाद आप हाई कोर्ट में गए थे और उसके जो हमारा बैक वेजेस था, बैक वेजेस तो हाई कोर्ट ने हटा दिया। नहीं उसमें फाइनल पे बैक वेजेस दे दिया है। वो एंट्री स्टे में हमको रीस्टेट करने के लिए बैक वेजेस छोड़ के रीस्टेट के लिए। कहाँ है ऑर्डर दिखाइए। बैक पेजेस क्यों नहीं दिया आपने इनका स्टेटमेंट पर? मैंने व्हाट हाई कोर्ट का ऑर्डर का कंप्लायंस तो करना कर पड़ता। दिए, दे दिए वो जो हाई कोर्ट। नहीं एक मिनट मेरे को बोलिए। हाँ। सर ये जो माननीय हाई कोर्ट ने आदेश किया था जो पिटीशन में 95 की 12/30 उसके कंप्लायंस में हमने दे दिया। भी ऑर्डर में उल्लेख भी आया है, इनने वो मांगा है जिस टाइम के इनने काम ही नहीं किया और ये कह रहे हैं कि डिफरेंस ऑफ सैलरी। डिफरेंस ऑफ सैलरी नहीं, इनको मिलेगी बैक पेजेस। जी जी जब आपने इनको हटाया था 17/7/93 से, जी जी जब आप वापस हाई कोर्ट के ऑर्डर से ये रीइंस्टेट हुए। जी जी हाई कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर किस तारीख का था? वो हमने पूरा मैं पढ़ देता हूँ सर। एंट्री ऑर्डर 97 नहीं था। तो ये 93 से 97 के बीच का जो पीरियड है, जी जी इसके लिए बैक पेजेस दीजिए। इसका प्रूफ कहाँ है बता दीजिए। आप डॉक्यूमेंट फाइल कर दीजिए कि मिश्रा नहीं तो इसमें फाइंडिंग भी आई है जो इम्प्लीमेंट ऑर्डर। फाइंडिंग से पीके मिश्रा प्रेस फॉर टाइम टू फाइल ऑन रिकॉर्ड कॉपी ऑफ द vouchers oblique details void which petitioner who was removed from service void order dated 17/7/93 and was reinstated without back and was reinstated by the orders of the High Court dated। आपने अभी बताया 97 की डेट, कब की डेट है वो? ये फर्स्ट स्टे ऑर्डर है 28/7/97। 28/7/97 on record on his request 2 weeks time is granted to do the needful list उसको along with कर दीजिएगा 6.1 पे। चलिए Serial number 7, DK Dixit. Lord, I was medically incapacitated. Babu sir, Lord, I was directed to bring the notification with regard the person with disability. My lord, they are exempted from this act. With due respect to my learned friend, I think the statement is totally misplaced. The accident occurred in 93. एक सेकंड ये गजट नोटिफिकेशन देख लीजिए आप पहले। देखा ना मैंने? मैं दे देख दिया। लिया आपने? हाँ, अब क्या कहता है ये कह रहे हैं कि इनका कहना है कि वो they are the forces are exempted जी from the provisions of that this act. जी जी My submission is not well, may kindly see. The accident occurred in 93 जी and P10 was issued, P10 Yes. पेज नंबर whereby have been removed P26, another page 23. पेज 23 yes This is dated 20 अगस्त 2001. जी पढ़िएगा। इस ग्रुप क्रेन के सो सिपाही
जीडी देवेंद्र प्रसाद तिवारी को इस ग्रुप केंद्र में गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा सॉलिसिटी ऑफ नीट मेडिकल लेटर एंड इनका पता नहीं क्या क्या लिखा है इन्होंने के परिणामस्वरूप आगे इस बल में अन्य किसी सेवा के लिए पूर्णतः एवं स्थायी रूप से असक्त घोषित किया जाता है। जी अनुसार इस ग्रुप केंद्र के संबंध सेवाई स्वयं को अनुच्छेद के 19 और नीचे लिए भारत सरकार के निर्णय संख्या 13 के प्राधिकार के तहत इस कार्यालय के पत्र दिनांक स्वेट द्वारा 1 महीने का नोटिस दिया जाएगा, जिसमें उसे सेवा से सरकार प्रस्ताव था और उसे आगे सेवा के लिए असक्त घोषित करने के मेडिकल बोर्ड की राय के विरुद्ध अपील करने का अधिकार दिया गया था। मुखिया के माध्यम से प्राप्त उसे दिनांक के जवाब में उसने मेडिकल बोर्ड का कार्रवाई के विरुद्ध कोई साक्ष्य आधार प्रस्तुत नहीं किए। अतः इस ग्रुप केंद्र के स्वयं जी देवेंद्र प्रसाद की 20/8/2001 की अपराह्न से सेवा से असक्त किया जाता है। यह है डिसेबिलिटी नियमावली पेंशन के पाने नियम 28 के अंदर असक्ता पेंशन पाने का पात्र है। जी ठीक है। अनुच्छेद 4 नीचे दिए गए भारत सरकार के निर्णय के विभिन्न प्रावधानों के तहत सोचो और उसे अपील करने की तिथि से असक्ता की तिथि को अवधि को किसी प्रोविजन के लिए इस व्यक्ति अवधि में निवास ड्यूटी पर व्यतीत अवधि में नियमित करने मंजूर की जाती है। कार्योत्तर मंजूरी प्रदान की जाती है। जी So my submission is Marat. The incident occurred in 93. yes This order is issued in 2001, yes and that is why since the notification is not applicable, which notification which is sold by for exemption. नहीं I am claiming that I should be treated on duty. Any light work should have been given to me. नहीं I understand that there is a notification of 1995 also 1995 का notification कहता है जी in exercise of the powers conferred by proviso to section 47 of the Persons with Disabilities Equal Opportunities Protection of Rights and Full Participation Act 1995, Well, central government having regard to the type of work carried on OCD 2002 notification hereby exempt all categories of post of combat personnel only of the central paramilitary forces, namely Central Reserve Police Force, Border Security Force, Indo-Tibetan Border Police, ITNA and Assam Rifles from the provisions of the said section. अब आप किस प्रोविजन में एम्प्लॉयमेंट मांग रहे हैं ये बता दीजिए। सेक्शन 47 47 अभी 47 तो रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन है क्या? आपकी डिसेबिलिटी है 93 की, ठीक है, और ये एग्जाम्पशन है 2002 का। नहीं ये एग्जाम्पशन का जो नोटिफिकेशन है 2002 का है। I have been boarded out in 2001. So what will be the impact of this? This is not applicable. बताइए मैडम। My lord, as far as this question is concerned, this is not ground in their petition. I will have to seek instruction. Otherwise, my lord, he was kept. बार-बार He was kept, my lord, on light duty as many as 5 years, my lord. Thereafter, he was produced before the medical board, and medical board has, based on the opinion of the medical board, my lord, he has been invalidated. जी My lord, may permit me to read the opinion of the medical board. जी नहीं, पहले आप इस पे इंस्ट्रक्शंस को ले लीजिए। Yes, my lord. लिखिएगा श्री डी.के. दीक्षित क्लाइंट काउंसिल फॉर द पिटिशनर, श्रीमती कनक गहरवार फॉर द रिस्पोंडेंट्स। श्रीमती कनक गहरवार has produced notification dated in September 2002 whereby central paramilitary forces were exempted from the provisions of section 47 of the Persons with Disabilities within bracket equal opportunities, comma, protection of rights, comma, and full participation, bracket close, F 1995. Full stop. Shri Dikshit submits that petitioner earned disability in the year 1990 by the order dated 20th August 2001. He was boarded out. Full stop. Therefore, this notification will not be applicable to his case and he is still entitled to seek light duty employment in terms of the provisions contained in section 47 of the Act of 1995. Next, Srimati Gehrawar submits that this ground is not taken by the petitioner in the
grounds raised in the petition. Therefore, she will have to seek instruction about the applicability of this notification. On her request, कितना समय चाहिए आपको? 2 weeks, my lord. 2 weeks time is granted. List this case in the week commencing 13 फरवरी 2023. My lord, it could be the 6th or after, in week 20 within फरवरी 30. कर 20 फरवरी कर. I'm grateful. Serial number 8. Serial number 8 Mohammed Qasim, Degrees Bakery, SC Kohli. None for the petitioner. By way of indulgence, case is adjourned. List chapter 8 weeks. Serial number 9. With clear stipulation that if on the next date parties fail to appear, then petition may be decided on either be decided on its own merits or be dismissed for want of prosecution. Serial number 9. 8 working. 8 minutes. Your Lordship, I am praying for a Passover in serial number 8. Serial number 8. Final hearing number 8. Later on she appears. इनका नाम डाल दीजिए and prays for Passover. Please be taken up in the next week. चलिए. Obliged, Your Lordship. Serial number 9. Candy Srivastava, DTK Sroti. कुछ बचा है क्या 20 साल बाद इसमें? Go to respondent number 4. Private respondent is working as still, my lord. They are seeking, my lord. In place of the, my lord, private respondent, the appointment. फर्स्ट राउंड में से आप कलेक्टर को रिमांड हुआ था मैटर. कलेक्टर है रीजन ऑर्डर पास एंड मतलब दे आर चैलेंजिंग दैट. सिक्स क्या पॉलिसी है?
None for the petitioner. Petitioner has filed this writ petition claiming a direction that appointment of respondent number 1, which should be actually respondent number 2, be quashed and direction be issued to extend appointment to the petitioner with all consequential benefits. Next paragraph. Annexure P2. Thereafter, respondent number 3 had issued an advertisement dated 17/2/1999, Annexure P4, inviting applications for appointment to the post of Shiksha Karmi Grade 2 and Shiksha Karmi Grade 3 for Nagar Palika Parishad Devri District Sagar. Full stop. Admittedly, a select list was issued in which name of the petitioner, respondent number 2, was placed in merit, whereas that of the petitioner in the waiting list at serial number 1. Full stop. Being aggrieved of this list, petitioner had preferred an appeal which was dismissed. Then he had preferred WP 1867 of 2001 before the High Court, which was disposed of wide order dated July 2001. July 30 July 2001. Holding that since Rule 12 of Madhya Pradesh Nagar Palika Shiksha Karmi ब्रैकेट में भर्ती तथा सेवा शर्तें ब्रैकेट क्लोज रूल्स 1998 gives power to the collector to hear the appeal against the order passed under the rules by Nagar Palika Parishad and the Nagar Panchayat. Therefore, petition was allowed. Order dated 14/11/2000 was set aside and matter was remitted to the collector to hear and decide the appeal. Next paragraph. Admittedly, after remand, appeal was heard and decided by the additional collector Sagar, wide order dated 14/11/2000.
मैंने कितना है ये नहीं 14/3/2002 कहाँ है 14/3/2002 का order was heard and decided by the court of Vietnam by order dated 14/3/2002 wherein collector has held that submission made by the petitioner that there was no justification for calling the Gurujis for interview. Gurujis engaged in Shiksha Guarantee Kendra for interview if their place is not in the merit list. Full stop. However, learned additional collector held that petitioner had secured 46.37 marks, whereas the defendant number 1, Devendra Kumar, had secured 57.37 marks, and thus he was more meritorious, and therefore petitioner was kept in the waiting list, and there was no violation of the merit. Dismissed the appeal. Next para. Now in this second round of litigation, this order passed by the additional collector is being assailed. Next para. There is no material available on record to show that petitioner was more meritorious than the respondent number 2, and therefore once appeal is decided on the basis of the relative merit as is discussed by the additional collector, comma, there appears to be no illegality or arbitrariness in the impugned order calling for interference. Petition fails and is dismissed. Dear number 10. Kana Agarwal. We'll clear this matter next week, my Huh? lord. I'm paying for next week this क्या matter. हो गया? When my file is displaced, my lord, I have to reconstruct the file. Ms. Kanak Agarwal for the petitioner Shri Respondent 1 and 2, Ishan Singh Pawar. Respondent. Ishan Singh Pawar for respondent number 1 and 2. Madam Garwar, please for time to Mrs. Garwar, please for time to prepare this matter. On her request, list this case next week. I'm not finished. Dear number 11. Rekha Rupmaya. Anaya sir. So this case of a termination after department inquiry. Sir, I apologize, sir. We are not aware of this matter. Let me inform my senior about the matter. He might have missed this case. I was sitting for some other case. अच्छा, आपका शुभ नाम बताइए. Akshat Shukla, sir. Akshat Shukla submits that he has probably missed to mark the case and place for short adjustment. Shri Anup Nair has no objection. This next week. Obliged, sir. With clear stipulation that if counsel fails to appear on the next day, then petition may be decided on its own merits or may be dismissed for want of prosecution. Dear number 12. The O.P. Dwivedi. Petition relates to appointment in the post of Shiksha Karmi grade 2, your lordship. The respondent number 2 was not initially appointed on the post of Shiksha Karmi, your lordship. But thereby, my lord, I challenge the her appointment by way of filing an appeal before the collector, your lordship. The collector upheld my appeal, your lordship, and her appointment was quashed, your lordship, giving me certain marks in experience category, your lordship. Thereafter, my lord, the respondent number 2 preferred an appeal before the commissioner, your lordship. Now the commissioner has set aside the order of the path by the collector, lordship, and my appointment has been set aside. Against that order, we have come up before your lordship. आज क्या स्टेटस को है क्या इसमें? स्टेटस को सर हम स्टे पे अभी तक काम कर रहे हैं, 2023 तक काम कर रहे हैं. पर इनका अपॉइंटमेंट हमसे हायर पोस्ट पेज पे हो चुका है, वो हमने सर एग्जिबिट लगाया, एनेक्स P7 देख लें सर.
तो ये रेगुलराइज भी हो चुके हैं ग्रेड 1 में, हम ग्रेड 2 में काम कर रहे हैं, हमारी पोस्ट इनकी ग्रेड जो जिस पे वर्तमान रूप में काम कर रहे हैं उससे नीची पोस्ट है. इन स्पाइट ऑफ दैट my lord, she is vehemently insisting upon this petition my lord. नजमा बेगम, आप नजमा बेगम के लिए हैं? Yes, sir. आप तो ऑलरेडी वर्क कर रहे हो, फिर क्या दिक्कत है? Number 1 पे थे, she was having a less marks than me. नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अब दोनों जने काम कर रहे हैं, 20 साल से स्टे है, क्या करना क्या है? आपके इंस्ट्रक्शंस क्या है? आर यू वर्किंग और नॉट? My lord, I have the instruction that she has now been selected as in the post of civil judge, your lordship. Now she has gone way above the sixth academic grade, your lordship. They may seek instructions and they may verify this fact. वेरीफाई कर लीजिए, सिविल जज बन गई तो उसका बचा क्या है? फिर आप उनके सामने अपीयर हुआ करेंगे. बता दीजिए. अब नेक्स्ट वीक श्री मैं भी Tripathi for the petitioner, Shri K.N. Fakhruddin for, Khalid Noor Fakhruddin for respondent number 2, Shri Manasmani Verma for the state. Next, Honorable Counsel for the petitioner submits that private respondent number 2 has been selected as civil judge and is working as civil judge in the state of Madhya Pradesh. Shri Fakhruddin seeks short adjournment to seek instructions. List in the week commencing 6 फरवरी 2023. Serial number 13. चार बजे जी. Lord, in this case, a minor punishment of stoppage of one increment for 2 years without cumulative effect was imposed. The petitioner was a doctor. He assaulted another doctor. That has come in page 69 of the cross-examination itself. For that stoppage of one increment. 20 साल बाद तो सब ये रिटायर हो गए होंगे, सब कुछ नहीं होगा. None for the petitioner. This petition is filed being aggrieved of the order of penalty imposed on the petitioner for stop withholding of one increment for a period of 2 years without cumulative effect on account of after conducting departmental inquiry and finding that petitioner was guilty of assaulting another doctor working under SECL. Full stop. Shri Anup Nair submits that statement of articles of charges framed against the petitioner are available as Annexure P2 and there is a limited scope for interference in the findings of a departmental inquiry. Full stop. Since inquiry officer had proved the guilt of the petitioner and thereafter punishment has been inflicted. Full stop. It is further submitted that the order appealable नहीं था क्या? सर ये अपील का ही था सर, ये जो कोल इंडिया के बाद नहीं रहेगा सर. नहीं रहेगा. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स का है. He was कोल इंडिया ने कम्युनिकेट किया होगा the order because he is an executive, he is an officer grade, so punishment order would be full stop. We submitted that there is no material on record to show that there was any impropriety in the conduct of the departmental inquiry or the punishment imposed is grossly disproportionate to the alleged misconduct. 2 grounds available to show cause interference in the order of punishment. Full stop. In view of such facts, when the impugned orders are examined and it is seen that even in appeal, order passed by the chairman cum managing director of Southeastern Coalfields has been upheld by the chairman cum managing director and appellate authority of Coal India Limited, there being limited ground for interference in such disciplinary matters and there being no material to show
any element of bias or a procedural irregularity, comma, I do not find it to be a fit case to cause indulgence in the matter of minor penalty imposed on the petitioner. Petition fails and is dismissed. Serial number 14. But in this petition, the petitioner was working as a constable in the Central Reserve Police Force, Your Lordship. He overstayed the leave granted to him, Your Lordship, and that is why the termination order has been passed, Your Lordship. Yes. The only ground, my Lord, under challenge, my Lord, we are raising in this petition, Your Lordship, that the show cause notice for conducting a departmental inquiry was not received by the petitioner. Whereas the CRPF, my Lord, they filed the reply, they stated that a proper departmental inquiry was conducted, the witnesses were examined, Your Lordship, but an ex-party proceedings were conducted against me. बताइए आपका क्या मतलब my case is, Your Lordship, that who is appearing for the respondent? Mr. Siddiqui and Mr. KK Singh name is appearing in the cause list, Your Lordship, but Union of India would be representing. Union of India would be representing. तो यूनियन ऑफ इंडिया इसमें इंस्ट्रक्शंस लीजिए, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का रिकॉर्ड बुलवाइए जिससे मालूम पड़े कि इनके नोटिस तामील हुए थे कि नहीं हुए थे. श्री त्रिपाठी सुयश त्रिपाठी for the petitioner, Shri Harshvardhan Singh Rathore, Learned Counsel Rajput for respondent Union of India. Shri Rajput is directed to call for the records of the departmental inquiry to demonstrate that notices were actually served on the petitioner. If raised for and is granted 4 weeks time to do the needful list immediately after 4 weeks. Serial number 15. Yes, Jayawat. My Lord. My Lord, the petitioner was appointed, my Lord, on the post of the instructor, my Lord, on this side. Under the scheme of the Rajiv Gandhi Shiksha Mission, my Lord, as per Exhibit P1, my Lord. Thereafter, my Lord, Respondent 5, my Lord, raised the objection before the collector that the petitioner is not belonging to the village Lonha. And thereafter, my Lord, they prefer appeal before the collector, and the collector dismissed the appeal on the ground of non-maintainability, my Lord. And against which prefer appeal before the commissioner, my Lord, and that has been rejected, my Lord. That too has been rejected. Rejected, my Lord. Actually 2004 से हमसे कांटेक्ट में भी नहीं है ये पिटिशनर जो है. तो नो इंस्ट्रक्शंस करके खत्म करें हो तो कहीं और पहुंच गया होगा अभी तक तो 20 साल. हाँ 20-22 साल हो गए. Garwar submits praise for pleads no instructions in the matter. Petition is dismissed for want of instructions. Serial number 16. Ashok Srivastava. Ayat. Well, this petition probably were earlier also twice dismissed for want of मेरिट पे कर देते हैं ना इसको. क्योंकि सर फाइनली तब डिस्पोज हो गई थी 2 बार शायद. भाई ये किस चीज का प्रमोशन मांग रहे हैं ये? इसका जो ये ओए ग्रेड 1 की पदोन्नति चाह रहा है सर. हाँ. We seeking promotion as OA grade 1. ठीक है. Where is the seniority list of OA grade 2? अच्छा. That is at page 8A1, my lord. Page A1. In accordance with the ये तो promotion order है. Time bound promotion scheme introduced by इतना the following OA grade 2 attached to the offices as noted against each are hereby appointed temporarily to officiate until further orders as OA grade 1. Who are the private respondents? D.L. Meghani, Qasim Ali, Shripal Jain और N.P. Vaishya.
A3 है OA grade 3 please list your lordship at एक page सेकंड OA ग्रेड 3 की लिस्ट से काम नहीं चलेगा। प्रमोशन जब आप OA ग्रेड 1 की लिस्ट में कर रहे हैं, प्रमोशन ऑर्डर है 2000 का। क्या स्टैंड है आपका? Not unfortunately even my file got क्योंकि पहले 2 बार हो गया था तो it got देख सकते हैं।